Hello, a very good evening to all, and welcome to the class. Please fill the poll. Okay? Everyone is my screen is visible and my audio. Everyone need to fill the poll. Yes. Okay. Okay. Great. Okay. That's all. Fine. So, in last class, basically, we are done with the chemical properties of alkene. Some of the chemical properties we already covered. So, from today, we are starting from the same, that is the chemical properties of alkene. So, let's start with the class. Okay, so we have Markovnikov's rule, right? Let me quickly revise this rule. What we study in the Markovnikov rule. So basically, in Markovnikov's rule, whenever asymmetrical alkene, remember this thing, beta, asymmetrical alkene. So whenever the asymmetrical alkene is treated, okay. So whenever asymmetrical alkene is treated with the hydrogen halide, right? Then we have a two product formed. One is called major product and one is called minor product. So which one form major, which one form minor? So this can be explained by Markovnikov's rule. Okay. So what the rule said that according to this rule, H or electrophilic part of the attacking molecule. So here this is an attacking molecule HBr. So this is partial positive, this is partial negative. Okay. So according to this rule, H or electrophilic part of the attacking molecule gets attached to that carbon atom which have more number of hydrogen atom, right? Someone also say this rule like the negative part, that is the nucleophilic part, attached to the those carbon atom having less number of hydrogen. So both things are correct, right? अगर in nucleophilic part वहां attached हो रहा है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, and electrophilic part वहां attached हो रहा है जहाँ पे कम वहां पे ज्यादा hydrogen है. So both are same things. Okay. So what happened? This Br is attached to this carbon atom, and this H get attached to this carbon atom. So the result, we have 2-bromopropane. क्या मिला? 2-bromopropane as a major product. So what in case of anti-Markovnikov's rule? What is anti-Markovnikov's rule, beta? So in anti-Markovnikov's rule, we treat this asymmetrical alkene with particular specified reagents, that is benzoyl peroxide. Okay. So in this case, one bromoalkane formed as a major product. Why? Because this benzoyl peroxide shows free radical formation, where in case of the previous one, that is Markovnikov's rule, they are stable by the carbocation. Okay, so this thing you need to remember. So this free radical of bromine is attached to this carbon, make them more stable. ठीक है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है. तो this thing we already talked in a previous class. So let's start with the new thing. So we already covered with the Markovniks and anti-Markovnikov's rule. Okay, so let's see the statement behind this anti-Markovnikov's rule. So in presence of peroxide during the addition of HBr to a asymmetrical alkenes, Br atom attached to that carbon which has a more number of hydrogen atom, just opposite to the Markovnikov's rule. ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया. तो पेरोक्साइड में देखो, इस वाले के पास एक हाइड्रोजन है, दिस इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो Br कहाँ जाएगा? जहां पे ज्यादा नंबर हो, यानी CH2 के पास. तो ये बन गया. डन. चलो, कोई बताएगा क्या? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? राइट द फाइनल प्रोडक्ट when HBr is added to 3-methyl but 1ene without and with the presence of this. तो एक तो लिखना है विदाउट peroxide मतलब Markovnikov's rule, and with presence मतलब एंटी Markovnikov's rule. So first of all you need to draw the 3-methyl but 1ene diagram. So this is the structure of 3-methyl but 1ene, right? Is this, जल्दी बताओ, समझ आया ये? 3-methyl but 1ene. डन. ओके. अब यहाँ पे आप HBr का एडिशन कराओ. नाउ ऐड HBr हियर. यस.
Okay, now add HBr here. Everyone, add HBr without peroxide. I'm talking. So Br goes to which carbon? Which carbon? Out of these two, Br कहाँ जाएगा? CH पे जाएगा या CH2 पे जाएगा? Without peroxide. Markovnikov's rule. So Br goes to those carbon which containing less number. Yes, CH पे जाएगा. Very good. Okay, good. So the product is this one because secondary carbocation is much more stable. देखो हुआ क्या है, ध्यान से समझना थोड़ा. यहाँ पे गया HCH3, यहाँ पे गया Br, CHBr. नाउ अब ये जब Br यहाँ पे गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे Br का फॉर्मेशन हो गया. अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है यहाँ पे. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू मीन बाय दिस हाइड्राइड शिफ्ट. अगर HC यहाँ पे लगता Br है ना, यहाँ पे अगर Br लगता, सो दिस विल बिकम सेकेंडरी कार्बोकैटायन, राइट. दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन. बस अगर इस वाले कार्बन पे लग गया तो दिस विल बिकम 3 डिग्री कार्बोकैटायन. एंड वी ऑल नो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल, राइट. विच कार्बोकैटायन? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज much more stable as compared to second and first degree. So where this nucleophile attack, this nucleophile attack to the 3 degree carbocation. So we can say that 2 bromo 2 methyl butane is the correct answer. Right? Which one is the correct answer? 2 bromo 2 methyl butane. So here hydride shift came into the picture. ठीक है. लगना था इसी सी एच पे, बट ये सी एच सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाता और ये वाला सी बना रहा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट. सो वी कैन से दैट बाय रीअरेंजमेंट दिस 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल. तो ये बी आर यहाँ लगेगा. सो द फाइनल प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार कंफर्म करो. इज दिस क्लियर? यस. ये हाइड्राइड सिर्फ समझ आया? यस सर, हरमित त्रिवेदी. यस. Okay, what about others? Is this clear to everyone? Chalo. Now, with peroxide. So, what in case of peroxide? If the peroxide is present, so this SBr treated. Now, no rearrangement and anti-Marconic addition. इसमें कोई भी rearrangement नहीं होगा और anti-Marconic addition होगा. So, according to this, Br कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे. ठीक है. सो बी आर हमारा यहाँ पे लग गया. सो द फॉर्मेशन क्या हो गया? 1 bromo 3 methyl butane. So formation of 1 bromo 3 methyl butane takes place. Now let's see the next reaction, that is the addition of sulfuric acid on alkene. What happened when we add sulfuric acid on alkene? So this is, we have an alkene and we add concentrated H2SO4, then alkene hydrogen sulfate will form. What form? Alkyl hydrogen sulfate. This is known as electrophilic addition reaction and this also follows the Markovnikov's rule. Right? Let's understand. So let's see the mechanism behind this reaction. So we have H2SO4. Okay? So what is the tendency of acid? Anyone? एसिड क्या करता है? एसिड हैविंग टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन, राइट. सो H2SO4 में से H प्लस आयन निकल गया. सो क्या बचा? दैट इज SO4H, राइट. HSO4 हमारा यहाँ पे बच गया. HSO4 नेगेटिव. नाउ दिस इज एल्कीन. अब इस एल्कीन पे इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और अटैक करके क्या बना दिया? कार्बोकेटायन. ये H यहाँ पे लगा और यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन. नाउ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल हेयर बिकॉज कार्बोकेटायन बना है. so whenever carbocation is formed rearrangement is possible, right? इज दिस क्लियर? सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. कैसे होगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल? सो ये नेगेटिव वाला इस पे कार्बन पे आया, दिस नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है. इसने इस कार्बन को सपोर्ट किया और सपोर्ट करके क्या बना दिया? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. तो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विल
took place. Now let's see the example. Let us assume if we have an ethene. So यहाँ पे इथीन पे क्या बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3 CH2 पे पूरा OSO3H लगेगा और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा. सिमिलरली इफ वी हैव प्रोपीन, OSO3H आके यहाँ पे लग जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. राइट. सो ये OSO3H है जो H प्लस एंड OSO3H के नेगेटिव पार्ट, ये पूरा कहाँ पे लगा है, ये आके लग गया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स रूल, और ये H यहाँ लगा. सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट विल टेक प्लेस. इज दिस क्लियर? हाउ वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन एल्कीन? Yes, tell me everyone. Yes, beta, confirm. Is this clear to everyone? Yes, sir. Rest also need to reply, beta. Only Harmit is replying. All of you need to reply. Okay. If you understand, if you have doubt, कुछ भी problem है, you can ask. Okay. Next, addition of dihydrogen. So this is very simple reaction. When you add alkene and when you add hydrogen in alkene, ethane will form, right? So this method we are already using in the method of preparation of alkanes, right? By the dehydrogen का addition होता है in presence of platinum, palladium and nickel. So this is a very simple reaction. Okay, done. Okay, move to the next question. That is addition of water. So how will you add water? Addition of water takes place. देखते हैं फटाफट जल्दी से. Addition of water. So let us assume if we have an alkene, right? So this is alkene we have, and we need to add H2O and alkene. So हम क्या add कर रहे हैं? H2O को add कर रहे हैं alkene में. Okay. So this is H2O एंड दिस इज alkene. सो क्या हुआ, यहाँ भी मार्कोनिक्स रूल, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, सो सेम एडिशन होगा. सो यहाँ पे दो तरीके का एडिशन होने वाला है, रिमेंबर करना. द फर्स्ट वन इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एंड द नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. सो वी हैव अ टू acid catalyzed. So in acid catalyzed, we follow Markovnikov's rule. In hydroboration oxidation, we follow anti-Markovnikov's rule. Let's see. Okay. So first of all, acid catalyzed hydration. What is the mechanism of this reaction? Acid catalyzed. So we have an acid called H2SO4. So as acid have a strong tendency to give H plus ion. So again here electrophile H plus ion is produced. This electrophile attack on alkene to form stable carbocation. Now this carbocation is formed as an intermediate. So rearrangement is possible here. So यहाँ पे rearrangement की possibility भी है. Now, here we have water, right? Hydration. This is called acid catalyzed hydration. So here water act as a nucleophile. तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन हो गया हम लोगों का CHOH2 का, राइट. नाउ ऑक्सीजन कभी भी अपने पे नहीं चाहता कि पॉजिटिव चार्ज हो. सो व्हाट दे हैपन, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से जल्दी से ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पे हो जाएगा. तो H प्लस अगेन मिल गया, then H plus again attack to alkene, then again carbocation is formed, उसके बाद फिर से न्यूक्लियोफिलिक का अटैक. So this process keep on continuing, right? So formation of alcohol took place and this will follow Markovnikov's addition, right? Now, by acid catalyzed dehydration. So in this what happened? So in acid catalyzed dehydration, let's understand with an example. So if we have CH3, CH, double bond CH2 plus H2O. So this is OH negative and H. यहाँ से एडिशन कराओ तो क्या मिल गया, प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला. सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे क्या होता बेटा, दैट इज हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है. व्हाट रूल वी नीड टू यूज? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. रिमेंबर दिस टू थिंग ओनली. इन केस ऑफ acid catalyzed hydration, we apply Markovnikov's rule. In case of hydroboration oxidation, we apply anti Markovnikov's rule. Right? Chalo, let's see.
सो यहाँ पे हमारे पास प्रोपीन है, राइट, दिस इज प्रोपीन. नाउ इन BH3 molecule, this H act as a electrophile and this BH2 negative act as a nucleophile. So due to the incomplete octet of BH3 act as a electrophile here. So what they form? They formed four-member cyclic transition state, and after in final state they form propyl borane, right? Now let's understand with an example. मान लो हमारे पास है CH3, CH2 and BH2. They will form. Now they again react with the 2 mole of propene. So they form tripropyl borane. Tripropyl borane. Right. Now this HOO negative act as a nucleophile. अब दिस इज द ट्राइबोरेन एल्केन. ये स्ट्रक्चर हो गया ट्राइबोरेन एल्केन का. 3 एल्केन दिख रहे हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे आएगा हमारा H2O नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल. वो बोरोन पे सीधा अटैक करेगा. एंड फॉर्मेशन किसका हो गया? दैट इज 1,2 alkyl shift from boron to oxygen and the formation of trialkoxyborane, and we get the 3 mole of ROH, right? Basically, remember one thing only. In your 12th class, when you study alcohol, phenol, and ether, in this chapter, you are going to see this reaction in a detailed way. Here only you need to remember what happened when the alkene is treated with acid, right? H2SO4. Okay, so just remember two things: anti-Marconics and Marconics. In acid catalyzed hydration, we use Marconics, and in by hydroboration oxidation, we use anti-Marconics. In your 12th class, you're going to see this reaction in a detailed way. Okay. Now, anyone identify the major product in this? कोई भी पहचानना चाहेगा major product of the following reaction? Dilute H2SO4. What is the major product? This is alkene. Acid catalyzed reaction करा दो बस. OH नेगेटिव H पॉजिटिव. मार्कोनिकॉप्स रूल लगा दो. कहाँ OH लगाओगे, कहाँ H प्लस लगाओगे, बताओ. यस एवरीवन ट्राई. एक बार ट्राई करो एटलीस्ट. यू नीड टू ट्राई. देखो, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन. सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल, OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? विच कंटेन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस कार्बन कंटेन एनी हाइड्रोजन? One bond, two bond, and two bond. No hydrogen. And this carbon contain three, only one hydrogen. So this H supposed to go where? Right. So yes. So this H attack to this point only. Carbocation का formation हुआ, and the formation of one ethyl cyclohexanol will took place. क्या मिला? One ethyl cyclohexanol. Let's see the oxidation of alkene. We already covered the oxidation of alkene, right? कि oxidation of alkene में क्या मिल रहा था. Now let's see the oxidation of alkene. So alkenes on reaction with the different oxidizing agent, depending upon the condition, produce different compounds. Okay, so depending upon the different condition, they produce different compounds. First one is on treatment with the Bayer's reagent. Okay, so what is this Bayer's reagent, beta?
Bayer reagent means cold and dilute aqueous solution of KMnO4. So this is known as a Bayer's reagent. Cold, dilute aqueous solution of KMnO4. So when the alkene is treated with a cold and dilute solution of aqueous KMnO4, what is the role of KMnO4? So KMnO4 acts as a very very good oxidizing agent. Means it provide oxygen. ठीक है, ये क्या provide करता है? Nascent oxygen. So when we treat this alkene with H2O and O, they will give us vicinal glycol, right? And this is also called syn addition. Why? दोनों OH ग्रुप एक साथ ही लगे हैं, एक ही तरफ से लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड सिन एडिशन. Similarly, let's see another example. If we have an ethene, right? This is ethene. When treated with H2O in presence of nascent oxygen, they will form ethane 1,2-diol. That is called glycol. क्या बनाते हैं ये? Glycol. It is a very very important compound, right? Glycol बहुत जगह काम आता है एंटी डिप्रेसेंट रीजेंट की तरह. तो whenever we treat ethene with dilute H2O, है ना, मतलब dilute KMnO4 के साथ, जहाँ पे H2O ऑलरेडी होगा and KMnO4 to provide nascent oxygen, so they are oxidized to give glycol. Okay. Similarly, when we treat propene, sorry, when we treat propene, they will form propane 1,2-diol. So on oxidation, alkene produce alcohol. Remember this thing. Now, test for unsaturation. So this is also a very useful test for the unsaturation. Suppose if someone asks if you have to differentiate between saturated and unsaturated, okay, you need to differentiate between saturated and unsaturated compound, then what you need to do? So you need to do this test, right? So this is also used for the test for unsaturation. How will you perform this test? Now, let us assume this is a colorless solution of unsaturated compound, right? So when you put some drops of Bayer's reagent, that is pink. Bayer's reagent is basically in pink in color. So when you put some drop of Bayer's reagent, their pink color disappear. So colorless solution after reaction with KMnO4 with unsaturated compound. ठीक है, तो क्या हो गया? जब उसने रिएक्ट किया तो कलरलेस हो गया. तो इससे हमें साफ साफ पता लग गया कि भाई ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. अगर आप सैचुरेटेड में डालते हैं तो उसमें कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आता. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके. So when butene is treated with KMnO4 and H plus, okay, so what they form? They formed ethanoic acid, that is called acetic acid. So whenever the butene is treated with KMnO4, they will form ethanoic acid. Similarly, on treatment with concentrated hot KMnO4 acidified K2CR2O7, when we treat methyl propene, so they will form प्रोपेनॉन. देखो यहाँ से टूटेगा ये CH3CO CH3 प्रोपेनॉन, एंड क्या बन गया? HCOOH. ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है आप लोगों को. डन. यहाँ भी क्या, यहाँ से ब्रेक किया, क्या मिल गया? CH3COOH. CH3COOH. Now, what will be the product of the following reaction? Dilute KMnO4. ऑक्सीडेशन कराना है एल्कीन का, बताओ क्या बनेगा? सिंपल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. What will formed in this reaction? When you treat this cyclohexene with dilute KMnO4 and 273 Kelvin, cyclohex 2,3-diol.
ओके, एनीवन एल्स? देखो बेटा, चार ऑप्शंस है, कौन सा दिख रहा है? ए बी सी डी। ए, हरमित ने बोला ए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को पता था द एडिशन विल बी द सेम एडिशन एंड डाइऑल्स विल बी फॉर्म्ड एट कॉन्जुगेटिव कार्बन, है ना? सो ऑप्शन जो था ए वो बिल्कुल करेक्ट था। ओके, कि ए सेम एडिशन है, दोनों एक साथ ही होगा। गुड। नाउ नेक्स्ट वी हैव ओजोन लिसेस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स में क्या मिलता है, किस तरीके से ये पूरा होता है। ओजोन लिसिस ऑफ एल्कीन, so in this we treat alkene with O3, zinc and H2. It's a very simple reaction. So just remember, when we treat this alkene with O3, zinc and H2O, क्या बनेगा? कुछ मत करो, तीन O है ना, give one O to this oxygen, one O to this oxygen, एक एक O दोनों जगह दे दो, one O to this carbon and one O again to this carbon. Okay. So when we do ozonolysis O3 in presence of zinc and H2O, carbonyl compounds will form. Carbonyl compound means either two molecules of aldehyde formed, or one aldehyde and one ketone is formed, or either two ketone is formed. Okay. So this is the ozonolysis. For example, this is called formaldehyde. This is called aldehyde. This is called ketone. These all are called carbonyl compounds. Remember this thing. Okay, now let's see the reaction. No need to see mechanism. Let's see reaction first. Here we have CH3, CH double bond, CH and CH3. So जहां भी double bond है वहीं से break करो. Give one oxygen to this side, one oxygen to this side. तो क्या बना? CH3CHO, CH3CHO, यानी two molecules of ethanol. साथ ही ZNO निकल गया. Similarly यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, CH2, CHO, that is propanol, and ethanol, CH3 and CHO. Right? So this is the formation takes place. Now, this is very important questions, right? 2-bromopentane is treated with alcoholic KOH to form alkene X. Okay, so 2-bromopentane को आपने treat किया with alcoholic KOH to form an alkene X, and X on reductive ozonolysis give 2-aldehyde Y and Z. What is X, Y, and Z? Can anyone tell me what is X, Y, and Z? 2-bromopentane. Okay. So this is the structure of 2-bromopentane. You need to treat this 2-bromopentane with alcoholic KOH. You all know what happened with alcoholic KOH. A KBr निकलेगा and one water molecule also from the beta position. So this is alpha, this is beta, this is again beta. So which will form major product? कौन बनाएगा major? According to the Sirjeff rule, this will form major product, right? So beta elimination हुआ तो क्या बना? 2 pentene. This is 2 pentene. Now इस 2 pentene का आप reductive ozone lysis करो. So इधर दिया A को, इधर दिया A को, तो क्या बना होगा? That is CH3, CH2, CHO, propanol and ethanol. So the compound X, Y and Z are propanol and ethanol. And what is X? X is nothing but 2 pentene. So 2 pentene is X and YZ are propanol and ethanol. Is this clear? Yes. Okay. Good. So this is the structure. Now, ये बताओ. An alkene A which contain 3 carbon-carbon, 8 carbon-hydrogen sigma bond, and 1 carbon-carbon pi bond. A on ozone lysis gives 2 moles of an aldehyde
having molecular mass 44. Write the IUPAC name of it. How will you identify which alkene is this? कौन सा एल्कीन ये होगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? Which alkene is this? How will you identify? यस, कोई तो बताओ. एनीवन? Let's see what is the approach for solving such kind of question. So they are saying 2 moles of an aldehyde will form. 2 moles having molecular mass 44. Right. So देखो, CH3CHO इसका molecular mass कितना होता है? C 12 into 2, that is 24. वो we have one oxygen, that is 16 into 1. तो 24 से 30 10 40 और 4 हाइड्रोजन यानी 44. राइट. सो 44 मतलब बन तो रहा है CH3CHO. सो CH3CHO बनने के लिए कैसा एल्कीन चाहिए? ऐसा चाहिए ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH and CH3. हम्म. अगर आप इसको ब्रेक करो तो क्या मिलेगा? CH3CHO अगेन CH3CHO. तो विच टाइप ऑफ एल्कीन यू वांट? दैट इज ब्यूट टू इन. राइट, ब्यूट टू इन, ब्यूटीन. हाँ, गुड. सो ब्यूट टू इन हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगा. ठीक है. देखो अब, सो ब्यूट टू इनके पास वो कंडीशन भी है. 3 सिग्मा, 3 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मीन्स 4 कार्बन एटम, है ना? तो जब भी बोले 3 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ऑब्वियसली देयर आर 4 कार्बन एटम एंड 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो दिस इज ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन. दोनों की पॉसिबिलिटी है. दिस वन एंड दिस वन दोनों बन सकता है, ब्यूट वन इन बी, ब्यूट टू इन बी. बट हमें पता है कि यार हमें चाहिए क्या? इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल. अगर आप ये लेते तो आपको क्या मिल जाता? प्रोपेनॉल मिलता और एक मिल जाता फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल, विच इज नॉट द करेक्ट वन, है ना? तो ये तो करेक्ट नहीं होता. तो करेक्ट क्या होगा? दिस वन. कि जब आप इसको लोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिलेंगे. डन. डन एवरीवन, फटाफट बताओ, इज दिस क्लियर? क्लियर, गुड. Now, let's see the polymerization of alkene. So, chemical process that combines several monomers to form a polymeric compound are called polymerization reaction. Right? So, if someone asks what is polymerization, तो polymerization का मतलब क्या होता है? एक ऐसा chemical process that combine several monomer, बहुत सारे monomers को जो combine करे to form a polymeric compound. Right? सो मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, दैट इज द मोनोमर यूनिट एल्कीन का. इसका अगर हमने पॉलीमराइजेशन कराया, क्या कराया? पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमर करने पे ये क्या बन गया? एल्कीन. ठीक है, तो एल्केन का पॉलीमर ये बना. सो दिस इज इथीन वी हैव. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलीथीन. सो इट कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास प्रोपीन है, राइट, इफ यू हैव प्रोपीन, सो प्रोपीन को जैसे ही ट्रीट करोगे, किसके साथ ट्रीट करना है? प्रोपीन को. सो व्हेन यू ट्रीट प्रोपीन, मतलब लार्ज, मतलब बहुत सारे प्रोपीन ले लो. पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे पॉलिथीन आप सबने सुना होगा, राइट, पॉलिथीन. सो हाउ दिस पॉलिथीन फॉर्म? व्हेन द लार्ज मोनोमर्स ऑफ इथीन कंबाइन. सो जब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स को जोड़ देते हैं, सो दे विल फॉर्म पॉलीथीन. सिमिलरली व्हेन प्रोपीन को लोगे आप तो क्या मिल जाएगा? पॉलीप्रोपीन. तो ये बहुत सारे पॉलीमराइजेशन में बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं.
टेफ्लॉन हो गया, पॉलीप्रीन हो गया। सो दीज ऑल आर द पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या करना है, आपको अल्कीन के छोटे छोटे यूनिट्स लेने हैं, उनको जोड़ना है, और जोड़ के आपका यहाँ पे एक कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, चलो। ये आपको नहीं करना, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल भी अभी, ये भी नहीं करना। यस, ये बेटा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ बस, ताकि आपको ध्यान रहे कि पॉलिथीन पॉलीमराइजेशन में जो आप पॉलिथीन का यूज कर रहे हो, तो ये सब किसका बना हुआ है, राइट। सो जैसे आप पॉलिथीन यूज करते हो, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक बैग्स, है ना। तो दे आर द मोनोमर ऑफ इथीन। मतलब बहुत सारे जब इथीन कंबाइन होगा तो पॉलिथीन बनाएगा, राइट। इस तरह का जो बोटल्स हो गए, लाइक मिल्क क्रेट्स हो गए, प्लास्टिक बकेट्स, राइट, दिस ऑल आर द मेड अप ऑफ पॉलिथीन ओनली। सो क्या क्या एल्कीन के अंदर किया था, इसका समरी देख लो एक बार फटाफट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पढ़ा था कलरलेस, ऑर्डरलेस, solubility कि दे आर insoluble in water. Then we started with chemical properties. So in chemical properties we studied about the alkene, right, कि what happened when alkene undergo a reaction with the H2 in presence of platinum, palladium and nickel, they will form alkene. सिमिलरली हम लोगों ने X2 का एडिशन पढ़ा था, दैट इज द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, बेयर्स रीजन, राइट। So in presence of CCl4 they will form vicinal dihalides. फिर हमने एडिशन ऑफ HX पढ़ा था, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। HX कि सिमेट्रिकल के लिए एडिशन कैसे होगा एंड असिमेट्रिकल, जिसमें मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स रूल को हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑफ H2SO4 कि हाउ विल यू ऐड H2SO4 यूजिंग मार्कोनिक्स रूल टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द एडिशन ऑफ H2O, हाउ द एडिशन ऑफ H2O टेक्स प्लेस। इसमें भी दो मेथड्स पढ़े। द फर्स्ट इज एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन एंड द नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। नाउ फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा कि व्हाट हैपन व्हेन वी डू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। सो एल्कीन का जब भी ऑक्सीडेशन करोगे तो विसिनल ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा। फिर हमने उसमें पढ़ा था ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन का कर रहे हो तो आपको एथेनोइक एसिड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वी हैव ओजोन लिसिस। तो फिर हमने ओजोनोलिसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, राइट। इधर दो मोल ऑफ एल्डिहाइड बनेगा या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा। सो दीज ऑल थिंग्स इन द ओजोनलिसिस। नाउ नेक्स्ट वी हैव पॉलीमराइजेशन, व्हेन वी टेक a small amount of monomers of alkene to polymerize to form the polymer। ठीक है, तो बस अल्काइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं अल्काइंस का, एंड नेक्स्ट हम लोग जो अपनी अगली क्लास होगी वहां इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो इन अल्काइंस व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सो इन अल्काइंस बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइंस, nomenclature and isomers of alkynes, preparation of alkynes. Nomenclature part we already done, right? Physical properties, acidic character and chemical properties of alkynes. So let's study about some important introduction about alkynes. So they also come under the category of unsaturated open chain hydrocarbon, just like alkene. So alkene and alkyne both are unsaturated hydrocarbon, right? In alkyne, they having triple bond. Alkyne में क्या होता है? Triple bond होता है. And what are the general formula for alkyne? So that is CnH2n minus 2. Quickly revise. What is the general formula of alkene? Anyone? What is the general formula of alkene? एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। क्या होता है जनरल फॉर्मूला एल्केन का? गुड। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n plus 2. For alkene it's CnH2n only. Yes बेटा, JNB more भी ठीक। And for alkene it is CnH2n only, and for alkyne the general formula is CnH2n minus 2. Good. Now, so first stable member of इथाइन is acetylene, यानी जो फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन का वो क्या होता है? एसिटाइलिन, या फिर आप
इथाइन भी बोल सकते हो, विच इज यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस। कहाँ यूज होता है? वेल्डिंग पर्पसेस की तरह यूज होता है। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा इथाइन का हम लोगों का, जिसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग होती है और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो दो पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों हमारे पाई बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग होगी। डन। जी। सो ये ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन एंड दो पाई बॉन्ड्स है। दिख रहा होगा आपको, दो पाई बॉन्ड्स। नॉमेनक्लेचर में आपको पता ही है क्या सफिक्स यूज करोगे, क्या यूज करते हो, तो वी यूज सफिक्स एस आइन, है ना। तो आइन सफिक्स वी आर यूजिंग। ओके, सो वी आर यूजिंग अ सफिक्स एज आइन, याद रखना सभी। चलो, फॉर एग्जाम्पल और दूसरा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहला का नाम हो गया ब्यूट वन आइन, फिर नेक्स्ट prop 1 था, sorry. Next one is but 1 and the another we have, the name is 3 methyl but 1 so their name is 3 methyl but 1 done. So alkynes shows generally the structural isomerism. Structural isomerism means they having the same molecular formula but different structures. So position, chain, ये isomer ये लोग show करते हैं। For example आप ध्यान से देखो यहाँ पे, so we have pent वन आइन। So pent वन आइन देखो क्या कर रहा है, अपनी डबल बॉन्ड की पोजीशंस को बदल रहा है ट्रिपल बॉन्ड की। जैसे ये देखो यहाँ पे ये पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन बदल के ये हो गई, यानी ए और बी शो पोजीशन आइसोमर, और ए और सी हैविंग चेन आइसोमरिज्म, बी एंड सी आल्सो हैविंग चेन आइसोमरिज्म। तो दे शो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। डन। चलो, सो इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू लॉन्च अ पोल हेयर, सभी लोगों को उस पोल को फिल करना है, राइट? फटाफट एवरीवन।